और आज हम बात करेंगे पंजाब किंग्स के बारे में जिन्होंने अपना नाम तो चेंज किया है बट विल इट चेंज देयर फॉर्च्यून्स दिस सीजन. We will discuss about their playing 11, their probable playing 11 with Siddharth Gulati here today. Siddharth, welcome back. And Thank you. शुरुआत ही बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है because केएल राहुल एंड मयंक अग्रवाल से हम शुरुआत करेंगे. A very fantastic opening combination last year, aggregated more than 1,000 runs in the IPL 2020 edition. There's no way it's going to be anything else, isn't it? Absolutely, absolutely. I think it makes sense to stick with the trio of KL Rahul, Mayank Agarwal, and then Chris Gale at 3. Because I think with KL Rahul we saw last season that उन्होंने perform तो बहुत अच्छा किया था, but कहीं ना कहीं जो उनकी batting approach थी, as even mentioned by वसीम जाफर, वो थोड़ा सा timid था. Because number 5 के बाद उनका batting भी पंजाब किंग्स का उस time पे उतना था नहीं, and Glenn Maxwell was also not performing. So I think still with the experience that KL Rahul have, and also he's one of the senior members of that side. He's the captain also, so it does make sense to just stick with him, and we might see an aggressive Rahul this season with the fact that Punjab Kings have a very I would say a very strong middle order. Yeah. And then Mayank Agarwal, he started the season off well, but उनको I think बाद में थोड़ा सा injury हो गया था, and then Mandeep Singh had to be promoted up the order. So yeah, I think this Karnataka duo would once again, I think that they will start for Punjab Kings. And then at 3, of course, Chris Gale. I think इस time कोई देरी नहीं होनी चाहिए उनको टिप playing 11 में लाने में. पिछली बार I think मेरे हिसाब से बहुत देरी हो गई थी. Yeah. उतना I think required नहीं था. So this is where I think Chris Gale, with his experience, he's a flamboyant batsman. We know what a character he is. Also a senior member, part of the leadership group. He does deserve a place. And number 3, I think, is the ideal position for him. And unless let's say there are any injuries or something, we might not be able to see David Malan, who was also. But थोड़ा अजीब नहीं होगा, like in a way you talk about दुनिया के best T20 batsmen according to the ICC rankings, David Malan. He definitely makes a case for himself. I think he batted really well in the final T20I. Obviously did okay I guess in the ODI as well. तो मतलब उनका भी केस बनता है, but I would also agree with you over here. Chris Gale, just his massive wealth of experience playing in the IPL, we all know his ability. कभी भी उनको भेज दो आप, he's capable of hitting 100. So I think that is something that will put Chris Gale above David Malan even for me. Coming to the next position, obviously, or one more West Indian we're going to talk about is Nicholas Pooran, someone who batted at an extraordinary strike rate last season. हमने बाद में T10 में भी देखा कि he was smashing the ball to all parks, and his explosivity will be so important. Yes, absolutely. I think वो निकोलस पूरन का जो रोल है वो पंजाब किंग्स के लिए एट नंबर 4 वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बिकॉज उनके एक तरीके से 2 रोल्स होंगे. पहला ये होगा कि अगर आपके विकेट्स जो हैं वो थोड़े जल्दी गिर जाते हैं तो मे भी शायद उनको कुछ 1-2 ओवर के लिए वेटिंग गेम अपना खेलना पड़ेगा बिफोर ही एक्चुअली डिसाइड्स टू गेट टू दैट एग्रेसिव मोड. बट अगर आपको पता है कि ऑलरेडी आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल चुका है तो उनको फिर बिल्कुल बॉल 1 से ही मारना पड़ेगा. सो एट नंबर 4 आई थिंक किसी भी टीम के लिए किसी भी प्लेयर के लिए किसी भी टीम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है. सो I think we can expect him to replicate his heroics of IPL 2020 or even let's say do one better in comparison to the last season. Absolutely, और काफी expectations रहेंगे. And talking about someone who is a little low key on expectations but definitely is a very utility player, Moises Henriques at 5. Yes. Welcome back to the IPL, I must say, because he did really well in the Big Bash. और with the bat, with the ball, also उनका जो captaincy experience है, उनका जो एक अलग सा तरीका है गेम को देखने का, काफी important होगा ये सीजन. Once again, I think, yes, absolutely, I completely agree with you. He is a senior player. He has been in and around the IPL setup and also the domestic circuit in Australia and the Australian international cricket teams for around maybe 8 to 10 years now. तो उनका जो रोल है with both bat and ball बहुत क्रूशियल होगा पंजाब किंग्स के लिए. Something we saw for जो उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी किया था 2016 में. तो काफी आई थिंक इंपॉर्टेंट रोल होगा बिकॉज वहां पे मे बी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वो थोड़ा टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे. आई थिंक यहाँ पे मोर ऑफ एक फिनिशर रोल होगा निकोलस पूरन के साथ. बट आई थिंक जो उनके जो 4 ओवर होंगे ना वो आई थिंक सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे बिकॉज ही इज आल्सो दैट वन काइंड ऑफ अ बॉलर जो अपने वेरिएशंस बहुत क्लेवरली इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यस, आई थिंक ओवरऑल इफ यू सी एज अ कंप्लीट पैकेज, as a fielder he is also good, with the bat he is good, with the ball he is very effective, and of course in the fielding he's going to provide his inputs to KL Rahul. So yeah,
very very utility player. मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन साइनिंग हो सकते हैं मोइसेस हेनरी की, प्रॉब्ली अ ब्लेसिंग इन डिलाइट, आई मीन डिसगाइज रादर फॉर मेनी ऑफ देम, बट Yeah. अभी हम थोड़ी मतलब द बॉलीवुड स्टोरी दैट गॉट कुक्ड अप आफ्टर दिस साइनिंग बिकॉज शाहरुख खान वाज साइन्ड बाय पंजाब किंग्स, but apart from that, just to talk about the massive ability that this guy has, we saw in the domestic circuit this season as well, हमने पहले भी देखा है in other TNPL as well कि ये Yes. काफी लंबा मारते हैं जब ये मारते हैं, and शाहरुख खान has to finish the game. Finishing was an issue last year, but when you get Yes. Shahrukh here, it looks really good now. Absolutely, absolutely. See, जब अभी इस साल ऑक्शन हो रहा था फरवरी में, तो मैंने उस टाइम पे ना अपना एक कमेंट शेयर किया था फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, दैट बिग स्टेज प्रेशर क्रिटिक्स, कैन दिस शाहरुख टू मेक इट काउंट? तो आई थिंक उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली आई थिंक उनका परफॉर्मेंस मैंने भी जितना देखा था, आई थिंक इनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने कुछ एक दो बहुत वेरी यूजफुल इनिंग्स खेले थे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में, एंड आई थिंक वो तमिलनाडु के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल भी रहा था. ऑन द अदर हैंड अगर मैं विजय हजारे ट्रॉफी में भी देखो तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स है, स्कोर्ड अ कपल ऑफ 50s देयर. Yes, So yes, yes. I think उनके हिसाब से थोड़ा सा, and I think Anil Kumble has also said that he sees a bit of Kyron Pollard and Shah Rukh Khan. Yes, he did say that. Yeah. Yes, he did say that. So I think overall as a package अगर मैं देखो तो yes, उनका भी रोल more or less वही होगा कि he just has to come out on the crease, come at the crease and smash the ball from just from the get go. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो yes, very very good player and expectations बहुत हाई होंगे because उनका जो बेस प्राइस था वो इनिशियली बहुत लो था और उनको बहुत ही हाई प्राइस में खरीदा गया है, बहुत ही फियर्स बिडिंग थी उनके लिए. आई थिंक आरसीबी ने भी उनके लिए बिड किया Yes, था. yes. तो yes, अगर मैं देखूं तो yes, it's a very very good buy and एक कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा उन पे ये भी होगा कि there is a very very good chance कि he could be picked in the playing 11 ahead of the experienced players like Deepak Hooda and Mandeep Singh, Yes. जो IPL के एक तरीके से रेगुलर्स रहे हैं हाँ. किसी न किसी टीम्स के लिए. तो ये थोड़ा सा भी प्रेशर रहेगा, तो उनको इनिशियली अगर उनको लेट्स से इनिशियली कुछ अगर मौके मिलते हैं तो he would really have to make it count. Absolutely, I think Shah Rukh Khan has to make it count, and we've seen one do that. Let's hope the other one does as well. Yes. और बात करेंगे और एक बिग मनी साइनिंग की, जय रिचर्डसन, जिनके बारे में काफी बात हो रही थी आईपीएल ऑक्शन के पहले से, और ही इज गॉन टू द पंजाब किंग्स. काफी अच्छी यूटिलिटी प्लेयर है, जैसे हमने मोइसेस हेनरिकेस की भी बात करी थी. विद द बॉल ऑब्वियसली जय रिचर्डसन स्पेशलिटी, एंड देन विद द बैट ही इज गुड इनफ टू टोंक अ फ्यू सिक्सेस इन द फाइनल कपल ऑफ ओवर्स. Oh yes, absolutely. I think main role तो of course उनको as a bowling all rounder का ये होगा, batting तो थोड़ा बाद में ही आएगी उनकी, but with the sheer pace और थोड़ा उनका जो swing का factor उनके out swinger to specifically to the right handers वो बहुत ज़्यादा crucial होगा पंजाब किंग्स के लिए. And I think जिस तरीके से उन्होंने बिग बैश लीग में परफॉर्म भी किया था this season, and with the way of course उन्होंने जितना भी ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछले एक आध साल में परफॉर्म किया है before he got injured, let's say just before the World Cup in 2019, he's going to be I would say he could possibly be the X factor for Punjab Kings here, because उनका जो 4 ओवर होंगे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही क्रूशियल होंगे. इट्स नॉट जस्ट पॉसिबली गोइंग टू बी अबाउट कंटेनिंग द रन्स, बट विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और अर्ली विकेट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं कि अगर आप एक मैच खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस के साथ, जो ऑन पेपर्स और अगर ऑन द फील्ड भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी ज्यादा है, तो वहां पे उनकी बैकबोन को तोड़ने के लिए उनको उनके अगेंस्ट इनिशियल विकेट्स निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. सो दैट इज वेयर आई थिंक झाई रिचर्डसन का जो केस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मे बी इन कंपैरिजन टू समवन लाइक राइली मेरिडिथ, यस, अनदर ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज वहीं पे थोड़ा एक्सपीरियंस फैक्टर भी आ जाएगा. एंड आई थिंक जिस तरीके से आई थिंक पंजाब किंग्स ने झाई रिचर्डसन के लिए बिडिंग कर रहा था, उनको इतने ज्यादा प्राइस में खरीदा बहुत मुश्किल है कि उनको ड्रॉप करेंगे. आई मीन अनलेस ही हैज अ वेरी बैड हॉरिबल सीजन, उनको ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है. और नंबर 8 पे द रिटर्न ऑफ मोहम्मद शमी, बहुत ही देखने लायक रहेगा. 20 विकेट्स लिए थे लास्ट ईयर आईपीएल में. ही विल पार्टनर जय रिचर्डसन ऑब्वियसली. आई वुड रादर से जय रिचर्डसन विल पार्टनर मोहम्मद शमी टू ओपन द बॉलिंग. और उनका रिटर्न, ही विल बी द primary Indian fast bowler for them, so they have to keep him wrapped in cotton wool as long as they can, because उनका fitness बहुत important होगा. Absolutely. I think उन्होंने since that Adelaide test जब I think उनके आर्म पे लगी थी before he got injured, जब उस टाइम पे शामी इंजर्ड हुए थे, उनके बाद I think इनका जो मैच पहला मैच होगा I think उसके बाद इस IPL में. So that is I think very very crucial होगा शामी के लिए भी इस सीजन, because he has to perform here.
to once again press claim for a spot, press his claim for a spot in the Indian लिमिटेड ओवर सेटअप, बिकॉज हमने लास्ट इंग्लैंड सीरीज में भी देखा कि थोड़े नए चेहरे उभर के आए हैं हमारे प्रसिद्ध कृष्णा एंड नटराजन तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में ही थे, तो एंड शार्दुल ठाकुर हैज आल्सो बीन डूइंग वेल ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो या उनके लिए थोड़ा क्रूशियल होगा। बहुत ही क्रूशल होगा। और ईशान पोरल अर्शदीप काफी एक इंटरेस्टिंग सिलेक्शन रहेगा, बट मुझे लगता है अर्शदीप मेक्स द कट बिकॉज अर्शदीप वाज ब्रिलियंट लास्ट सीजन एज वेल, काफी अच्छे फाइंड रहे हैं, और ईशान पोरल मे भी उनका बैकअप रह सकता है। या एब्सोल्युटली, आई थिंक अर्शदीप के साथ परसिस्ट करना थोड़ा इट मेक्स सेंस, बिकॉज अर्शदीप के जो थोड़े से वेरिएशंस हैं दे प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर पंजाब किंग्स लास्ट सीजन, तो उस हिसाब से ऑफ कोर्स वो थोड़ा ही इज आल्सो लेफ्ट हैंडेड बॉलर, तो वो भी एक कहीं ना कहीं वेरिएशन देता है आपको इन कंपैरिजन, और एक लेट्स से एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है इन कंपैरिजन टू कि अगर वो जैसे किसी राइट हैंडर को बॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा स्विंग भी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। तो यस ऑफ कोर्स आई थिंक यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, he is likely to make the cut ahead of Ishan Poral. और रवि बिश्नोई at number 10 is almost like a no-brainer, had a very good last year as well. But ये फाइनल पोजीशन की हम थोड़ी बात करेंगे मुरुगन अश्विन, बिकॉज मुरुगन अश्विन काफी इंपॉर्टेंट थे लास्ट ईयर। आई थिंक अश्विन और बिश्नोई ने काफी बेहतरीन स्पेल्स डाले थे एट सम पॉइंट विद इकोनॉमीज अराउंड 7, बट जैसे आपने लाइव हम लोग रिकॉर्ड करने से पहले हमने बात करी, जलद सक्सेना भी एक काफी इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकता है। Yes, absolutely. I think if I am to, let's say, if I am the coach and if I have to select the playing 11 for Punjab Kings, तो मैं जलद सक्सेना को initially prefer करूंगा for maybe to someone ahead of maybe Murugan Ashwin, primarily because of his experience. I think उन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में बहुत टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, वो बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, एंड ही इज आल्सो अ वेरी वेरी यूटिलिटी बॉलर। तो आई थिंक उसी अगर मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट maybe someone like Anil Kumble would have seen a lot more of him in the domestic circuit, being a seasoned veteran himself, like Anil Kumble, who is also an Indian legend, I would say. So yeah, I think उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जलद सक्सेना for me primarily because of his experience, he definitely makes the cut here initially. But of course, if he does not do well, then you can expect maybe someone like even Deepak Hooda or even Murugan Ashwin, to make the cut. I think I can agree with you here. I think जलद सक्सेना has to make this team. काफी टाइम बाद उनको एक्चुअली एक बहुत बड़ा मौका मिला है, और after playing having a good enough season for Kerala, I think he definitely deserves to make the cut. So this is our playing 11 for the Punjab Kings. We are still getting used to the name, and for the rest of the IPL action, stay tuned to the Sports Story. Thank you.